Yamuna Tira
to sing something? Yes, you want to sing something? All right, so we have some brief talk. Om Gyana Timirandasya, Gyana Jana Salakaya, Saksyo, Militam, Gyana Tasma, Si Gorave Namaha. Sacheta Mano, Shasta, Vitam, Gyana Pushale, Swayam Rupa, Kadamaya, Kadantisa, Kadantikam. Bande Si Krishna Chaitanya, Nityananda, Sahavadita, Gudadaya, Puspavanto Chita Chanditam. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Shivasari, Gaura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Picharine, Nirvishesha Swami Vipasatya. So I want to make a request. I know that most of you are very popular, so we'll be having phone calls here and there. So this time that we'll be here. Why? I'm just imitating what one bus driver told us in America when we joined it's called, I don't remember the name, but all this luxurious bus. So when we were in the bus, I was traveling from New York to Washington, D.C. So here the driver says, "Hi folks, I know you guys are very popular, and you have phone calls from all over America, and all over the world, and all over the world. But I beg you for one thing, sir. Now, keep your phone on vibe, and when you do receive a call, you just make sure that the person sitting next to you does not hear your conversation." महाराज बोल रहे हैं कि फोन को साइलेंट करके रखिए। अमेरिका में बस ड्राइवर ऐसे अनाउंसमेंट करता है कि मैं जानता हूं कि आप लोग सब बहुत पॉपुलर हैं, अमेरिका में बहुत जगह से आपको कॉल आ रहा है, बट आप जब बैठते हैं तो आपका फ़ोन जब कॉल आएगा तो ऐसे बात कीजिए कि आपका बगल वाला व्यक्ति आपको सुन ना पाए। तो हम लोग छोटे से गैदरिंग में बैठे हैं, तो जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तो सब फ़ोन को साइलेंट मोड में रख सकते हैं। So following the footsteps of that driver, we will solicit that, keep your phones on silent vibration, so that when you receive a call, you don't miss the call. But you can always call back after the satsang, because we're going to be talking. Our center of talk is Krishna and his devotees. And so this meeting is important. In the law court, any of you have been to court, witness a judge deliberating the case? Any of you have been to court? आप लोगों में से कोई गया है कोर्ट में? Anybody? Being to court is not a bad thing. I was working in the judiciary, so I was working in the court. So in the law court, in the law court, they call the judge your lordship. Okay? It's not Krishna, but they call him your lordship. जज को लॉर्डशिप बोलते हैं, my dear lord, my lord. And then, when you sit in the court to hear a case, you don't even talk to the next person. If you talk to the next person, you are arrested by the police. They say it's contempt of court. And it's a criminal case. जो कोर्ट में बैठे तो किसी बगल वाले व्यक्ति से ही बात नहीं कर सकते, पुलिस पकड़ लेगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगा, क्रिमिनल केस हो जाएगा। And phone? No, it's forbidden. You have your phone should never ring in the court. Otherwise you get into trouble.
They say, oh, my lordship, it was an oversight. It's a mistake. I didn't know. Okay. They don't take mistake, oversight in the law. They say, all right, we'll teach you a lesson, then you learn from your mistake. We'll send you to jail. आज ये नहीं बोल सकते कि फोन अगर बज गया, नहीं बोल सकते गलती से बज गया, ये मिस्टेक नहीं है। और ठीक है, मिस्टेक है तो दंड देना पड़ेगा, तब सीख जाओगे। तो जेल में डाल देते हैं। I think ISKCON people should go to the court and see how the court operates. ISKCON के वक्त सब कोर्ट जाना चाहिए, कैसे कोर्ट में काम काज होता है। Because I've seen in so many temples, people go to the temple to make telephone calls. Deity altar is open. Even you can't receive a call, you can make a call before a judge in the court. An ordinary human being. I want to talk of the supreme judge, Krishna. So, yeah. लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने बात करते हैं। कोर्ट में जाने से इतना रेस्ट्रिक्शन है, जो साधारण व्यक्ति के सामने एक जज है, और ये तो भगवान कृष्ण जो पूरा ब्रह्मांड का मालिक हैं, उनके सामने जाकर हम बात करते हैं, इतना ऑफेंसिव है। All right, so let's get back to business. Again, welcome everyone. And for those of you who have come here, you are very special souls. Because first thing that you're special souls is that you're born in India. Bharata bhumi te hal manase janma yara. Janma swatakikar kar upakar. This is Bengali language. But what it means is that to take birth in India, very special. If you're born in India, take advantage of that special birth to make your life auspicious, to make your life pure by cultivating devotional service, so that you can help to spread that purity. The world lacks purity, so that you can spread that purity to the whole world, to change the world. We don't like what is going on in the world. तो आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो भी इस सत्संग में आए हैं, क्योंकि शास्त्र में बोला गया है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म, जो भारत भूमि में जन्म हुआ है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। और ये बोला गया है कि सौभाग्य को हम भारत भूमि में जन्म हुए हैं, तो हमको अपने खुद को शुद्ध करके दूसरों को भी शुद्ध करना चाहिए। विदेश जो लोग हैं उनको भी शुद्ध करना चाहिए, हमारा दायित्व है। भारत में जो जन्म है उनका दायित्व है ना। So, for someone in the land of Bharat who is attending or who goes for a garden that is centered on devotion, Krishna consciousness, a person is exceptionally blessed. कोई अगर भारत में जन्म हुआ है और कोई जैसे गैदरिंग में जाता है, कोई आध्यात्मिक वातावरण में जाता है, वो व्यक्ति बहुत ही विशेष है। Now, a number of people in India from childhood, they are exposed to one type of worship or the other. भारत में जो भी बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही किसी न किसी प्रकार देवी देवता, किसी न किसी पूजा से जुड़ा रहता है। And the difficulty in preaching to Indians is that everybody or most people have an understanding of some spirituality, and in most cases they don't understand the prescribed spirituality for the age of Kali, the prescribed method for realizing the self, the prescribed method for realizing God, Krishna, in the age of Kali. भारत में प्रचार करने का ये एक तकलीफ है कि कोई ना कोई मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग ऐसे इन जनरल की बात बोला जाता है, तो किसी ना किसी संस्था से, किसी ना किसी देवी देवता से जुड़ा रहता है। बट उनको ये समझाना बहुत कठिन हो जाता है कि कलियुग में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा धर्म कलियुग में करना चाहिए, हाँ, जो शास्त्र में बताया गया है, ये समझाना बहुत कठिन हो जाता है। Kali Yuga started over 5,000 years ago, and the prescription, the method for the prescribed method for the worship of the Lord in Kali Yuga is described in the Brihad
Aranyanka Upanishad is prescribed in the Srimad Bhagavatam. It's also prescribed even in the Bhagavad Gita, because in the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, of sacrifices, I am japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Krishna, the Supreme Personality of God, he said, of sacrifices, I am chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. शास्त्र में बृहद आरण्यक उपनिषद में, भागवतम में, इवन ऐसे ही भगवत गीता में भी भगवान बोले हैं कि यज्ञों में जप यज्ञों है ना, जप हरे कृष्ण महामंत्र जप जो है यज्ञों में वही है, जप यज्ञ, ये शास्त्र में बताया गया है. So, if we understand this simple process of worship, this does not take anything away from your life. अगर ये साधारण चीज़ हमको पता चल जाएगा तो ये साधारण चीज़ आपके जीवन से कोई चीज़ बाहर लेके नहीं जाएगा. It doesn't require you to stop anything you are doing. आप जो भी कुछ कर रहे हैं कोई भी चीज़ बंद नहीं करवाएगा ये सारी, ये जो चीज़. You're walking, you're scrolling, whatever you're doing. This process is very simple. You just find time to chant. आप स्कूल जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वैसे आपको केवल समय निकाल के ये विधि करना पड़ेगा. इसे कोई हानि नहीं है. It doesn't require you to leave the home. आपको घर छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है. It just requires that you find some time out of your 24 hours. You find some time and chant Krishna's names. आपको 24 घंटे में से कुछ समय निकाल के भगवान का नाम लेना है बस. And the best time for easy and quick progress is early in the morning hours. और सबसे अच्छा समय है जो सुबह का समय है. सुबह पूरा ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के ये सब कर देना चाहिए. ये सबसे अच्छा समय है. Because that early morning time, the brain is calm. We are presided over by the mode of goodness, and you can concentrate on what you are doing effectively. क्योंकि सुबह का समय सब दिमाग ठंडा रहता है ना, तो उस समय अगर हम उसको अच्छे से करेंगे तो ये अच्छे से हम इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका फल अच्छा से मिलेगा. And if you go to bed on time, if you go to sleep on time, say 9, 10 o'clock, you'll be able to have enough strength to wake up at about 4 o'clock or 4:30 and do this job. अगर आप जल्दी रात को 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं तो आपके पास बहुत शक्ति मिलेगा कि आप जल्दी उठ जाएंगे, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएंगे और फिर जप करना आरंभ कर लेंगे. You need to sacrifice something. And what is that? Some people are addicted to watching movie till 2 o'clock. आपको कुछ चीज़ क्या करना पड़ेगा. कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही नहीं शौकीन, जो टीवी फिल्म देखने के लिए रात को 2 बजे तक देखते हैं, है ना. There are also some people who are addicted to reading the newspapers till late in the night, till the next morning, 2 o'clock, 1 o'clock. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं रात को 2 बजे तक 4 बजे तक ऐसे पढ़ते रहते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं. I know the case of one lady in the US. So this young man is an IT guy. He got married to this lady. He came to India, married to this lady. And she was not from a Vaishnava family. So she's used to this type of, not bad, not really sinful activity, but like materialistic adventures like reading a newspaper. She's literate.
So she liked to read in newspapers, Indian newspapers, until late in the night, 1 o'clock, 2 o'clock. She won't chant. The husband says, no, you have to chant. She said she doesn't have the time because she has to read newspapers, Indian newspapers, until late in the night, till the next morning. Yeah. एक व्यक्ति था, भक्त था, तो एक भारतीय नारी को विवाह किया, तो फिर भारत आया, तो उसका पति बोलता था कि आपको जॉब करना चाहिए। वो जो स्त्री था वो बोलता था मुझे पास समय नहीं है। क्यों? वो पढ़ा लिखा था, बट रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता था न्यूज़पेपर, तो इसलिए वह समय नहीं था उसके पास। So, yeah, we have different people have different problems. You may laugh at it. Come on, what is that? Reading newspapers? No, when some people are addicted to something that it just you may think, what is this? But addiction is a very powerful weapon that drags people down. सबका अलग अलग समस्या रहता है। आपको अगर ये सुन के हैरानी होता होगा, क्या रात को 2 बजे तक पढ़ाई कर रहा है न्यूज़पेपर? नहीं, ये होता है, लत जो होता है वो व्यक्ति को नीचे गिरा देता है ना। खराब अभ्यास जो होता है कहाँ कहाँ लेके फंसा देता है। So we can have so many excuses, like that lady. Her own excuse was reading newspaper. But you know what? The husband kept preaching to her, kept talking to her, no pressure. And then one day she thought over, this is my husband. And for the rest of my life, I'll be with this man. What is the problem with me? What do I lose if I stop reading these newspapers and start chanting? When the husband was preaching to her to chant, he was chanting 8 rounds every day. But the required minimum rounds for you to really say in the public that you are chanting is supposed to be 16. Means you are ready for for your next step, initiation and all this stuff. But the husband, he has big services at the temple, but he was chanting 8 rounds. Yes. जो उसका पति था वो 8 माला जप करता था, बट वो अपनी पत्नी को ऐसे ही प्रचार करता गया, बोलता है। तो एक दिन उस स्त्री सोचा कि अगर क्या हानि होगा अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दूंगा, इसके साथ मुझे जीवन भर ही रहना है ना, तो जप करने से क्या हानि है। बट ये जो पुरुष था वो मंदिर में सेवा करता था, बहुत सारे सेवा था, बट वो 8 माला जप करता था। ऐसे जनरली 16 माला जप करना होता है जो दीक्षा के लिए क्वालिफाई होता है। So this woman thought, this young lady, she thought, come on, something is wrong with me. I must overcome this. So one day she decided that she must chant. तो स्त्री सोचा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, वो जप करना शुरू कर दिया। And the day she started to chant, she started with 16 rounds. जिस दिन शुरुआत किया वो माता जी, उसी दिन ही 16 माला जप करना शुरू किया। So she was chanting 16 rounds every day. Husband was still chanting 8 rounds. Okay? 16 माला जप करती थी माता जी, बट जब उसका पति था वो 8 माला जप करती थी। So listen to what happened. In fact, the husband is the one who told me this story because I'm a friend to the family. वो पति जो था वो महाराज को ये स्टोरी बताया था। So one day the wife sat the husband down and she said, see, Krishna gave you 24 hours. And now he's saying you should give him only 2 hours of that 24 hours. And you are saying you would think about it? What is this? What type of person are you? Someone gave you 24 hours free and is now asking only 2 hours from you. And you cannot give? What type of attitude is this? एक दिन उसके पत्नी जो है पति को बिठाया, बोला कि भगवान ने तुमको 24 घंटा दिया है और तुम 2 घंटा नहीं दे सकते। ये किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार का
आदत है. So the husband thought, wow, this woman now is preaching to me, huh? पति सोचने लगा अब मुझे ये प्रचार कर रहा है. मैं जो प्रचार करता था तो ये अब मुझे बोलने लगा है. Because what the wife meant was that it takes 2 hours at most to chant 16 rounds. So what is the husband doing with his time? That he's delaying to chant the 16 rounds. So this gentleman, he told me he was weakened. He was completely weakened by the wife's bold step forward to preach to him. To chant 16 rounds. तो वो स्त्री जो है जो पति को बोला कि आपको 16 माला जप करना चाहिए, तो वही जो महाराज का दोस्त था वो महाराज को बताया कि मैं तो पूरा हैरान हो गया कि वो मुझे प्रचार कर रहा है 2 घंटा समय, क्योंकि वो पत्नी जानती थी कि 16 माला जप करने के लिए 2 घंटा समय लगता है, तो ये क्या समय कहाँ व्यर्थ कर रहा है. तो फिर वो पत्नी जो है पति को प्रचार करने लगी, तो वही महाराज को ये सब चीज़ बताया. जो पति था वो पुरुष था जो. So he said, right from that day the wife talked to him like that. Right from that day he started chanting 16 rounds. तो फिर पत्नी जिस दिन बोला कि आपको 16 माला जप करना चाहिए, उसी दिन से ही उसका पति जो था 16 माला जप करना शुरू किया. जो 8 माला करता था. Because traditionally in India the men seem to take a leading role in the families. Okay, here you have your wife having a leading role in the spirituality, so you feel like you're not a man. साधारण भारतीय परिवार में ऐसे होता है कि पति जो होता है लीड करता है परिवार को, परिवार का अध्यक्ष होता है. बट यहाँ पे देखा जाता है कि पत्नी जो है इस पति को आज्ञा दे रहा है कि शिक्षा दे रहा है कि आपको 16 माला जप करना चाहिए. तो Yeah, so if a woman wants to do something, there may be some delay if they are not into it. But if she wants to do something, she wants to do it perfectly well, without any reservations. And so you find out in a lot of the women in a movement, they lead their families in terms of the devotion. साइलेंट कर दे, आता नहीं. तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो स्त्री होता है उसको कुछ चीज़ करने में समय लगता है, बट जब वो करना शुरू कर देता है वो अच्छे तरह करता है चीज़ को. So in our way, they match up, they equalize in each other, and they're living very happily. And their daughter, they moved to Mayapur now because of the girl. They had a daughter, and they moved to Mayapur because of the girl. Because of the type of training they give to the girl, she has been the best student in Mayapur. Best student in terms of values, academics, and parents used to chastise their children that why don't you be like her? Why don't you be like तो वे लोग अभी मायापुर में आ गए हैं, मायापुर में रहते हैं क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा है, लड़की है. तो वो लड़की जो है वो स्कूल में सबसे टॉप रहती है, और लोग उसको देखा देख के अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू उसकी तरह क्यों नहीं होता है. बाकी लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को बोलते हैं तुम उसकी तरह हो. तो अभी बहुत आराम से आनंद से रह रहे हैं वो लोग. That girl is the only person in Mayapur who had a second degree before she was 8, a second initiation before she was 18, because she was so paka, morally
astute, academically astute. Everybody who knows her in that community know this girl, no running around with boys, focus on the studies, focus on her sadhana. So her Guru Maharaj gave a second initiation when she was, I think, maybe 16 or something like that. वो लड़की मायापुर Gave में a Brahmin initiation when she was like 16 or something. पहले ऐसे लड़की बच्ची है इतना छोटे उम्र में ब्राह्मण दीक्षा हो गया, क्योंकि वो लड़के किसी लड़कों के साथ घूमता नहीं है, पूरा पक्का है अपने पढ़ाई में, अपने साधना में, अपने भक्ति में, हाँ, इस प्रकार. So when husband and wife are serious in the sadhana, they can invoke that type of child into the family, who will come to represent the family and be a role model for other kids. जब पति पत्नी इस प्रकार का अच्छा साधना करते हैं तो इस प्रकार का अच्छे आत्मा को अपने संतान रूप में मिलता है, गर्भ धारण करते हैं, तो वो जो संतान आगे जाके एक समाज में एक रोल मॉडल, मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत करता है. What's the role model in Hindi? उदाहरण. So the process of devotional life, devotional service is not a difficult thing. If you are already exposed to this devotional culture, it's a matter of putting this in your life. Try to chant the Hare Krishna Maha Mantra every day, and you see the transformation in your household. There will be peace in the home. Husband and wife will have cordial relationship, loving relationship. Children will be happy. ये आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना इतना कठिन नहीं है, बाकी आप लोग तो कर ही रहे हैं, बट आप लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र को भी जप कीजिए. इसके करने द्वारा करने से पति पत्नी में अच्छा संबंध रहता है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, कर सकते हैं इसको. Just a simple process. Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बहुत साधारण चीज़ है, आप कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में जॉइन कर सकते हैं. And you do it on beats. आप लोग माला के ऊपर कर सकते हैं हरे कृष्ण. And you try it. If you have not been doing it, try it, and you see the impact on your life. आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं करने के लिए, और इस क्या लाभ मिलता है जीवन में खुद देख सकते हैं. And the best news or the good news is that this is the same mantra that will help us to go back home to the spiritual world, go back home, back to God, go back to Goloka. और ये एक अच्छी बात है कि ये जो मंत्र है भागवत धाम आपको लेके जा सकता है, हाँ, जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते हैं वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं शरीर छोड़ने के बाद. Because this world is not our permanent home. क्योंकि ये जो जगत है हमारा परमानेंट, मतलब हर एक पूरा समय हमको यहीं रहना नहीं है, हमको वापस जाना है कहीं ना कहीं, तो हम क्यों ना गोलोक धाम जाए जहाँ पे फिर लौट के नहाना पड़े. And that place, Goloka, there are no wars. Russia, Ukraine. गोलोक धाम में कोई युद्ध नहीं है, जैसे रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, अभी जो क्या नाम है इजराइल, हमास के हो रहा है, इस प्रकार का नहीं है, और कोई युद्ध नहीं है. You see, the problem is, if even you are not in those countries, just by hearing the way people are suffering, the way people are dying, is traumatic. It gives you bad feelings. हम उस जगह में नहीं है, बट ये सुन के हमको कष्ट हो रहा है कि कितना कष्टदायी जीवन है वहाँ पे. But life should be full of, happiness, susukam. But we find that just by hearing bad news, we get disturbed. जीवन सुख होना चाहिए, है ना. केवल हम उस चीज़ को सुन के ही दुखी हो जाते हैं, वहाँ पे रहने से क्या होगा. It means bad news is not suitable for
our sustainable growth. कोई भी खराब समाचार सुनते हैं तो हमारे जो जीवन धारा में ना अच्छा नहीं होता है। जो जीवन यापन हम कर रहे हैं, कभी खराब समाचार सुनते हैं तो हम अच्छा नहीं मानते हैं उसको। And the world we live in is called Mrityuloka, the planet of bad news. What is the bad news? Death. हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं ये इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। खराब समाचार क्या है कि मृत्यु होना यहाँ पे अनिवार्य है, यही सबसे बड़ा खराब समाचार है। कोई बोल देता है ना कि भाई मैं मर जाऊंगा, शुभ शुभ बोल most people don't like that. कोई बहुत सारे लोग मरना नहीं चाहते हैं। I will not say nobody likes that. I say most people, for reasons, because I have not conducted a quantitative research to find out from people all over the world, so I cannot generalize. I can only say most people. For sure, we know that if we take a sample of these people in this room and we ask, perhaps 99% will say they don't like that. So because I've not conducted any research in the whole world, I cannot say everybody does not like that. I'm not sure. But for sure, most people don't like that. मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं सब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं कोई रिसर्च नहीं किया हूँ। मैं कोई सब लोगों के पास जाके ये नहीं पूछा हूँ कि भाई मरना चाहते हो कि नहीं। बट यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कोई मरना चाहता, 99% बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं मरना चाहता हूँ। So it means we are in the wrong place. इसका अर्थ है कि हम गलत जगह में हैं, हमको मरना पड़ेगा, हम गलत जगह में हैं। Because death is one of the defaults of this material world. और ये भौतिक संसार में ये स्वाभाविक है कि मरना। So how to avoid coming back to this material world to experience the same bad things, the same bad news, the same bad news, how to avoid it? To take to devotional service. Because Krishna said, those who take to this path, they will attain me. Yam yam vapi smara bhava tyajite antikaleva. Whatever we remember at the time of death, we will attain that. So if we practice to do japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, we will get used to it. If even we're not carrying beads, we'll be chanting Hare Krishna mantra in our mind. So it becomes part of our life. So it's very easy to remember Krishna at the last moment. हम अगर मरेंगे यहाँ पे तो फिर यहाँ वापिस आएंगे, फिर यही जन्म मृत्यु चलता रहेगा। बट इससे कैसे बाहर निकला जाएगा? अगर आप कृष्ण भगवान बोले हैं गीता में, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजते अंत्यक्रम, जब जब कोई अगर मर रहा है तो अगर मृत्यु समय भगवान का नाम स्मरण करता है तो वापस चला जाता है, फिर रिटर्न नहीं आता है। तो हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि अंत काल में जैसे स्मरण आ जाए। अगर जब भी नहीं कर रहे हैं, अगर मन में भी कृष्ण आ जाएंगे तो गोलोक धाम चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे, मरना नहीं पड़ेगा फिर यहाँ पे, है ना। And it doesn't require you to change your position. आपको कोई आपका पोजीशन, आपका स्थान चेंज करना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे हैं उसी घर में हैं, कहीं पे भी हैं, आप वहीं पे रह के कर सकते हैं। If they are maintaining family, do your job, go to school, whatever. Just add this to your life, and you're a different person. You have a different destination. आप परिवार में रहिए, आप बिजनेस कीजिए, आप स्कूल जाइए और उसके साथ जब कीजिए, आप स्वाभाविक रूप से अलग व्यक्ति बन जाएंगे। जब करेंगे एक अलग पहचान आपका हो जाएगा। And the side effects, one of the side effects of this process of devotional service is that we'll become happy. Another side effect is that we'll be able to manage the mind
and our senses. इसका एक प्रतिक्रिया ये है, जप करने का एक प्रतिक्रिया है। हम अगर जप करेंगे हम सुखी होंगे, हाँ? और हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। People are suffering in this world because they don't have the skills of how to control the mind, how to manage the mind, how to manage the senses. And then sometimes people commit crimes, they go to the law court, and then they say, they read the charge to them, are you guilty or not? They say, I'm guilty with reason. What is the reason? The devil pushed me. The devil pushed me. The devil. Satan pushed me. But it's not Satan, it's the mind. There's nothing like Satan anywhere. The mind. The mind is the one that is, dragging us here, dragging us there, dictating to us. And if we know that this is even bad, this is not good, we do it anyway. And so Arjuna asked Krishna, it seems that I'm being forced to do things against my better judgment. How come? What is it? What to do? Krishna explained, yes, you're right. People with conditioned soul is forced to do things against his better judgment. Because we are conditioned. Sometimes we don't seem to understand what it takes to be conditioned. But we are conditioned. And I can explain what it takes to be conditioned. Why we do the wrong things. And we blame ourselves. Yes. व्यक्ति अपना मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, फिर वो गलत काम कर बैठता है, फिर थाना जाता है, कोर्ट जाता है, जज पूछता है क्यों किया, मेरा शैतान ने हमको करवा दिया। मन रूपी शैतान ने करवा दिया। तो यही चीज़ अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं करना नहीं चाहता हूँ कुछ गलत चीज़ें, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई धकेल देता है करने के लिए, है ना। तो हम सब बंधे हुए हैं, इसलिए महाराज बोल रहे हैं कि आगे भगवान ने बताया कि क्यों आप ऐसे करते हैं, क्यों हम बाध्य हो जाते हैं करने के लिए कुछ गलत चीज़ें। So there was one scientist. He conducted an experiment. एक वैज्ञानिक था, एक गवेषणा किया, परीक्षा किया। He was feeding a dog, caged dog. The dog is caged. He was feeding the dog. Before he brings the food for the dog, he rings the bell. एक कुत्ते को पिंजरे के अंदर रख दिया और खाना जब लेके आता है तो घंटी बजाता है। When he rings the bell, he measures the salivation of the dog, and he sees that each time he rings the bell, the dog is salivating because he sees the food. जब भी वो घंटी बजाता है तो डॉग कुत्ता क्या करता है, लाल गिराता है। क्यों? क्योंकि वो खाना देख के लाल गिराता है। So the dog gets used to that ringing of the bell and seeing the food, salivating spontaneously. He starts salivating. ये कुत्ते के साथ ये स्वाभाविक हो गया, जब भी घंटी बजाना होता है तो लार गिराता है। So this scientist, he did one thing. He rang the bell, no food. तो ये वैज्ञानिक क्या किया, वो घंटी बजाया और खाने के लिए नहीं दिया। The dog was salivating. कुत्ता लाल निकालने लगा। This is condition. यही हम बंधे हुए हैं, इसी प्रकार हम भी। The dog gets conditioned to. कुत्ता जिस प्रकार एडिक्टेड हो गया कि घंटी बजाएगा तो खाना मिलेगा, वो लार गिराने लगा, अभी खाना नहीं मिल रहा है। So when even there was no food, he hears the bell. जब घंटी बजाता है तो खाना नहीं है तो लार गिराना स्वाभाविक है उसके लिए, क्योंकि वो नियम में गिर चुका था। That is conditioning. यही
जीवन जो है बांध देता है हमको, इसी प्रकार हम बंधे हुए हैं। So we have also been conditioned for millions and millions. हम इस प्रकार बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस प्रकार बंधे हुए हैं अभ्यास में। So on our own, to free ourselves from this condition is very difficult. हम खुद को इस बंधन से निकाल पाना बहुत कठिन है। Therefore, we need help. इसलिए हमको एक सहायता का जरूरत है। And that help, because of that requirement, Krishna sends the spiritual master. इसीलिए कृष्ण भगवान जो है गुरु को भेजते हैं जीवन में, to come and help the conditioned soul. बद्ध जीवात्मा को सहायता करने के लिए गुरु को भेजते हैं। Because the conditioned soul has been suffering for many millions of lives. क्योंकि ये बद्ध जीव जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस प्रकार का कष्ट भोग रहा है। So the spiritual master comes and rechannels the energies of the conditioned soul to Krishna through devotional service. तो जो गुरु होता है, जो जीवात्मा के भीतर शक्ति होता है, वो उस शक्ति को कृष्ण के तरफ जोड़ने का प्रयास करता है। And Krishna is all pure, so he purifies the jiva. कृष्ण सब प्रकार के शुद्ध हैं, तो जीवात्मा को भी शुद्ध कर देते हैं। Now, the guru does not say, "Worship me, I am God." गुरु कभी नहीं बोलता है कि मुझे पूजा करो, मैं भगवान हूँ। As soon as someone says a guru and he says, "Worship me, I am God, you are God, he's God, she's God," that's a bogus guru. कोई अगर गुरु बोलता है कि मुझे पूजा करो, उसको भी पूजा करो, उसको भी पूजा करो, उसको ये भगवान है, वो तो गुरु नहीं है, वो ठग है। But this type of philosophy is very predominant in India. और इस प्रकार का जो धारणा है भारत में बहुत, How do they call it? Daridra Narayana? हाँ, दरिद्र नारायण बोलते हैं ना, कि सब जो भिखारी है सब Narayana cannot be poor. नारायण कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है। Narayana has 6 opulences in food. So नारायण there के is पास no time, there is no question of Daridra. 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, कभी भी ऐसा समय नहीं है कि वो भिखारी हो जाएगा। So people get deceived because of ignorance, and Prabhupada came to enlighten people, to open their eyes, watch people, examine anybody who says a spiritualist, examine anybody who says a guru. What is he talking about? He's talking about himself, or he's talking about Krishna? तो प्रभुपाद आके सब देखे कि कौन क्या बोल रहा है, कि कोई गुरु अपने आप को भगवान बोल रहा है या क्या बोल रहा है, सबको प्रभुपाद ने आके देखा और प्रचार किया। Anyone who says is a dog, is God, is a dog. प्रभुपाद बोलते हैं कोई अपने आप को भगवान बोलता है तो वो तो कुत्ता है। डॉग का जो अपोजिट है वो गॉड है। So in India we have many gods. भारत में बहुत सारे भगवान देखे जाते हैं। But there is a supreme personality of Godhead. There are many gods. ऐसे बहुत भगवान है, बट उसमें से एक बहुत बड़ा भगवान है। And these gods, they could be Jiva Tattva or Vishnu Tattva. 2 types of gods. दो जीव प्रकार तत्व, के भगवान विष्णु होते हैं, तत्व। एक तो जीव तत्व है, एक विष्णु तत्व है। Vishnu Tattva is a worshipable Supreme Lord or the plenary portion of the Supreme Lord. विष्णु तत्व जो होता है वो उनको पूजा किया जाता है, वो भगवान का ही साक्षात प्रतिनिधि होता है। The Jiva Tattva gods are the demigods. जीव तत्व जो होते हैं वो देवी देवता जो है ना, वो जीव तत्व भगवान है। So, example of Vishnu Tattva is Lord Vishnu, Narayan. उदाहरण के स्वरूप जो विष्णु तत्व भगवान है, नारायण है, राह है, नरसिंह है, इस प्रकार का है। So, there is a good understanding about gods in India, but number of people fail to distinguish between the demigods and the Supreme Personality of God. ये बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि देव देवता और भगवान कृष्ण, इनके भीतर अंतर नहीं जानते हैं, वो सबको भगवान की कैटेगरी में डाल देते हैं।
And sometimes we hear people say, any worship you take, any worship you do is fine. कोई कोई लोग बोलते हैं किसी प्रकार का पूजा करो सब एक ही But सब ठीक है the type of worship we embark on, we should equate that. We should equate it, put it on the scale and see whether this is a prescribed method of worship in Kali Yuga. हम जो भी पूजा करते हैं उसको हमको मापना चाहिए कि इस प्रकार का पूजा कलयुग में बोला गया है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, इस प्रकार का विचार करना चाहिए. Someone may read from the Vedas, and some sage has gone to the forest to meditate. He said, "Oh, I read from the Vedas." कोई वेद पढ़ा होगा, कोई अपना ध्यान लगाने के लिए जंगल में गया होगा, तो बोल सकता है कि ये वेद में पढ़ा हूँ मैं, ये वेदों में है. Let me also give up everything. I'm old enough. I'm retired. Let me give everything. I'm going to the forest and meditate. Because कोई बोल सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं जंगल में जा रहा हूँ ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि वेद में बोला गया है. in Kali Yuga, in this age, we started over 5,000 years ago. The required process of worship is not going to the forest to do the meditation, which people were doing when they were living for thousands of years. ये जो जंगल जाने का विधि था वो जो लोग 1000 वर्ष जीते थे उनके लिए था, बट अभी कलियुग में ये विधि नहीं है कि जंगल जाके ध्यान लगाना. We're living for a short period of time, maybe 100 years or less than that. हम लोग बहुत कम समय जी रहे हैं, 100 से भी कम हो गया, 100 वर्ष या उससे कम समय. That is why the Vedic literature provide, the author of the Vedic literature, Srila Vyasadeva, makes these provisions. People in Kali Yoga, they can attain the same goal by simply chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इसीलिए वेद व्यास ने लिखा है जिस कलियुग के जीवों को देख के कि कम समय में हम वही लाभ उठा सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करके. So, any comments? आपके पास कोई प्रश्न है? Need any comments, clarification? कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं. ये जब हम माला जपते हैं तो ध्यान कहीं और होता है, कभी कुकर की सीटी में, कभी मोटर चल रही है पानी, तो ये सब ठीक है नहीं है? जब हम when we are doing japa, sometimes our mind is in kitchen, is in outside, motor is going on, something like it. Is it okay or not? It's not the best, but ये it's like ये when we सर्वोत्तम have, नहीं है. that is the preliminary stage of chanting. The mind is like a stubborn child. ये प्राथमिक स्तर का जप है. जो मन जो है एक बदमाश बच्चे की तरह है. If the mind is someone watching you, stubborn child watching you, or wicked policeman watching you, and you carry the japa, immediately he stands alive. Okay, let me deal with him. Yes, that's exactly how the mind does. When you don't carry the japa, it leaves you at peace. You carry the japa, it comes with full force. It takes you this way, it takes you that way, it takes you that way, and this way. Just the mind is there to distract you. So Krishna had the same problem. Arjuna had the same problem. Because Krishna said you have to manage your mind, you have to control your mind. So Arjuna said that this will control this mind, my dear Krishna. It's like you're asking me to control the wind. How is that possible? अर्जुन के साथ भी यही समस्या था. भगवान बोले कि आप अपने मन को कंट्रोल करो. अर्जुन बोल रहा था कि ये करूँगा, वन चले जाऊँगा, वो करूँगा. बोले अपने मन को कंट्रोल करो. अर्जुन बोल रहा कि मन को कंट्रोल करना जैसे हवा को कंट्रोल पकड़ना जैसा है, नहीं हो पाता है. So Krishna said, yes, I resonate with you, I understand. Yes, the mind is very stubborn, very obstinate. मैं समझ रहा हूँ कि अर्जुन तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो. मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है. But he said, yes, it's possible.
ये संभव है? To bring the mind under control by what? By practice, regular practice and detachment. वैराग्य और अभ्यास के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं. So you're chanting and then the mind wanders away. Don't be worried. It's a general problem. Like a child. We're giving a class at the what's the name? Noida Temple. So there was only 2 boys, 6 years old, was sitting with the mother. But later he left. So the mother realized the child was not there. So he traced him and dragged him back. ये स्वाभाविक है कि मन चले जाना, ये स्वाभाविक बात है. जैसे एक बच्चा चला जाता है, फिर क्या करते हैं? बच्चा चला जाता है बाहर तो उसको फिर खींच के लेके आते हैं कि नहीं? उसी प्रकार मन चला जाएगा तो फिर खींच के लाते हैं उसको. मतलब करते रहे अपना काम. हाँ, नहीं, अपना काम करते रहो. मन अगर जा रहा है फिर खींच के लेके आओ. So the mind is also like that. It's just waiting. It wanders away to distract you. So Krishna said, don't get worried. Just drag him back. भगवान बोलते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. अगर चला जाता है ठीक है, फिर ले आओ. With the practice and detachment, gradually इस प्रकार का अभ्यास that will be minimized. That will be reduced. इस प्रकार का अभ्यास करने से धीरे धीरे मन जाना छोड़ देगा, कम हो जाएगा जाना. Any other comment? और किसी के पास कोई प्रश्न है? Any other comment? Okay, thank you very much. Srila Prabhupada. जय. ये जो भक्ति वासुदेव स्वामी महाराज की जय.